Bismillahirrahmanirrahim. Now let's move towards paragraph number 6. Drug addiction is really a very serious threat to any society. In Pakistan alone, there are almost 5 million drug addicts. Addicts undergo numerous economic, social, and health problems. The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it out. This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज रियली, हकीकतन, एक्चुअली, और यू कैन से ऑनेस्टली. सीरियसली, संगीन, अर्नेस्टली. थ्रेट, खतरा, धमकी, डेंजर, और यू कैन से रिस्क. अंडरगो, बर्दाश्त करना, सफ़र, बियर, और यू कैन से इंड्योर. एलिमिनेट, ख़त्म करना, पैरिश, एंड, और यू कैन से फिनिश. वाइप इट आउट, सफाया करना, क्लीन इट आउट. वॉव, अहद करना, प्रॉमिस. फिर्मली, मजबूती से, स्ट्रांगली, or you can say tightly. So after reading words meaning, now let's move towards translation of the paragraph. The first line is, drug addiction is really, नशे की आदत वाकई है, क्या चीज़ है, a very serious threat to any society, किसी मुआशरे के लिए एक संगीन खतरा. ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी. नशे की आदत वाकई किसी मुआशरे के लिए एक संगीन ख़तरा है. इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में देर आर आलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स. तकरीबन 50 लाख नशे के आदी लोग हैं. इन पाकिस्तान अलोन देर आर आलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स. सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख नशे के आदी लोग हैं. एडिक्ट्स अंडरगो, नशे के आदी लोगों को सामना करना पड़ता है, उनको गुजरना पड़ता है. किस चीज़ से? न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. मुतअद्दिद मुआशी, मुआशरती और सेहत के मसाइल से. न्यूमरस मीन मुतअद्दिद, बहुत ज़्यादा. Addicts undergo numerous economic, social and health problems. नशे के आदी लोगों को मुतअद्दिद मुआशी, मुआशरती और सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है. The governments all over the world have been trying. पूरी दुनिया में हुकूमतें कोशिश करती रही हैं. किस चीज़ की कोशिश करती रही हैं? To eliminate drug addiction from society. मुआशरे से नशे की लत को ख़त्म करने की. बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडिड. मगर मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है. टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, इसका मुकम्मल सफाया करने के लिए. द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन फ्रॉम सोसाइटी, बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडिड टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट. पूरी दुनिया में हुकूमतें मुआशरे से नशे की लत को ख़त्म करने की कोशिश करती रही हैं, मगर इसका मुकम्मल सफाया करने के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है. दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है, इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ, कि अगर लोग पूरी तरह आगाह हों. किस चीज़ से? द थ्रेट्स दैट ड्रग्स पोज, मंशियात से पैदा होने वाले मसाइल के ख़तरात से. This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose.
ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अगर मनशियात से पैदा होने वाले मसाइल के ख़तरात से पूरी तरह आगाह हों। दे शुड वाव फिर्मली, उनको मजबूत अहद करना चाहिए। वाव मीन वादा करना, हल्फ उठाना, फिर्मली मजबूती से। टू लिव अ हेल्थी एंड मीनिंगफुल लाइफ, एक सेहतमंद और बामकसद ज़िंदगी गुजारने का। They should vow firmly to live a healthy and meaningful life, उनको एक सेहतमंद और बामकसद ज़िंदगी गुजारने का मजबूत अहद करना चाहिए। पैराग्राफ की ट्रांसलेशन के बाद अब हम इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। ड्रग एडिक्शन इज रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। सो वेरी सिंपल कि यूज ऑफ ड्रग्स पोजेस a serious danger to the society। ड्रग एडिक्शन के लिए हमने यूज ऑफ ड्रग्स का वर्ड यूज किया और सीरियस थ्रेट के लिए हमने सीरियस डेंजर का वर्ड यूज किया। द नेक्स्ट लाइन इज इन पाकिस्तान alone there are almost 5 million drug addicts। Very simple, in our country about 5 million people have fallen prey to drug addiction। Addicts undergo numerous economic, social, and health problems। The drug addicts have to face so many serious economic, social, and health problems। The next line is the governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it out। तो सिंपल इंग्लिश है द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर टेकिंग स्टेप्स टू वाइप आउट द हैबिट ऑफ ड्रग एडिक्शन फ्रॉम द सोसाइटी। हाउएवर द स्टेप्स टेकन बाय देम आर नॉट सफिशिएंट टू एलिमिनेट इट कंप्लीटली। तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस को दो सेंटेंसेस के अंदर डिवाइड किया। द नेक्स्ट लाइन इज this can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose। In order to purify our society from drugs, we must make people aware of the dangers of drugs। And the last line is they should vow firmly to live a healthy and meaningful life। We must persuade them to live a healthy and useful life, a life free from all kinds of drugs। So dear students, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 उसकी ट्रांसलेशन भी कंप्लीट होती है।